Hello everybody, I am Dr. Lodhi Kanis Fatma, Head of the Department Political Science from JTR Science and Commerce College, Malegaon. Dear listener, today I am going to present my lecture on federal system. The Constitution of India provides for a federal system of government, though the term federation has now here been used in the Constitution. In article number 1 that India is Bharat shall be a union of states. Mostly the federal system or federations is found in a vast populated country, and India is also a country where we see huge population and vast territory. So to control the total population under one government, it is very difficult. So father of the Constitution prescribed federal system for India. In this slide we see that why India adopted फेडरलिज्म. जैसे कि अभी मैंने बताया कि जहाँ पर रियासतें बहुत वसी होती हैं, पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर टोटल पॉपुलेशन को एक ही गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल करना और तमाम तरह सहूलतें एक ही गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है. इसीलिए फॉर द सेक ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन India also accept फेडरलिज्म. फेडरलिज्म की वजह से इंटरनली डाइवर्सिटी जो है हमारे हिंदुस्तान में जो मौजूद है, मीन्स मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी कल्चरल पीपल्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, there is diversity. So to reduce this diversity or to give the benefits to all people, we have accept federal system, and there is need of sharing power also. Means if the total power is under the hand of central government, it is very difficult to control the whole country. That's why we see that in federation, the government is divided into two parts, that is center and the states. And all the states are autonomous and independent in their respective work, but they are connected with center for some important matter, that is defense, foreign policy, currency, railway, budget. All these important matters handled by our center. Now we see the definition of federalism. It is a system of government in which power is divided between central authority and various constituent units of the country. What are the objectives of federalism? Number 1, to safeguard, promote the unity of the country. Number 2, accommodate regional diversity. यूनिटी, इंटीग्रिटी मुल्क के बरकरार रखने के लिए फेडरलिज्म का होना लाजमी था हिंदुस्तान में. डाइवर्सिटी के बावजूद भी हम यहाँ देखते हैं कि हमारे यहाँ पर यूनिटी है. तो ये फेडरल सिस्टम की वजह से है, क्योंकि तमाम रियासतें अपनी अपनी जगह पर इंडिपेंडेंट हैं, ऑटोनॉमस हैं, अपने अपने ज़ाती मामलात को खुद संभालती हैं.
हमारे दस्तूर की जानिब से मुख्तलिफ़ पावर्स बाँट दिए गए हैं। यूनियन लिस्ट है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो करती है, स्टेट लिस्ट जिसे स्टेट करती है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है तीसरी, उसे दोनों गवर्नमेंट्स देखकर अपने कवानीन बना सकते हैं। ये नहीं कॉमन है कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पर हम फीचर्स देखेंगे फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं। फेडरलिज्म के फीचर्स दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं, नंबर 1 फेडरल एंड नंबर 2 यूनिटरी फीचर्स। व्हाट आर द फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? Number 1, dual polity means two sets of government. India has two sets of government, the central or union government and the state government. The central government works for the whole country and the state government look after the state. The area of activity of both the government are different. Number 2, division of power. Constitution of India has divided powers between the central government and the state government. The 7th schedule of the Constitution contains 3 lists of subjects, which shows how division of power is made between the two sets of government. Both the government have their separate power and responsibility. That list are union list, state list, concurrent list and residuary list. The next federal feature is written constitution. Constitution of India is written. Every provision of the constitution is clearly written down and has been discussed in detail. It is regarded as one of the longest constitution of the world, which has 395 articles, 22 parts and 12 schedules. Our Indian constitution, Indian federal system is having rigid constitution. Means in some part of the constitution there is very rigidity, means the amendment should be made by special majority, not a simple majority. Now the next point is supremacy of the constitution. The constitution is regarded as the supreme law of land. No law can be made which will go against the authority of the constitution. दस्तूर और आइन के खिलाफ कोई भी कानून नहीं बन सकता. If any person disobey the law, the person get punishment. Constitution is above all, and all citizens are within the territory of India must be loyal to the Constitution. Our federal feature of Indian Constitution mention that supremacy of judiciary means the Supreme Court of India is the highest court of justice in India. It has been given the responsibility of interpreting the provision of the Constitution. It is regarded as the guardian of the Constitution. Next feature is bicameral legislature. It means in India the legislature is bicameral. The Indian Parliament, that is the legislature, has two houses, the Lok Sabha and Rajya Sabha. The Rajya Sabha is upper house of the Parliament, representing the states
while the Lok Sabha is the lower house representing the people in general. After feature of federalism, now unitary elements in Indian Constitution. Unitary element said that more power with center. केसी वेयर कहते हैं कि इंडियन फेडरेशन इज़ अ कॉजी फेडरेशन, नीम वफाकियत है यहाँ पर। मीन्स आवर स्टेट्स are autonomous in their respective matter, but for some special purpose they are connected with center, and our unitary feature shows that our center is more powerful than state, because there are several reasons. Because more power with the center, emergency provisions इज़ इन द हैंड ऑफ सेंटर। कोई नागानी हालात आ जाए, इमरजेंसी हालात हो जाए मुल्क में, तो इसका डिसीजन सेंटर करती है। नंबर 3, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। अगर किसी भी रियासत की गवर्नमेंट फेल हो गई तो अल्टीमेटली उस रियासत के पावर स्टेट के पास चले जाते हैं। इससे जाहिर होता है कि हमारी फेडरल सिस्टम में स्टेट्स की बनिस्बत सेंटर को ज़्यादा पावर दिए गए हैं। इंटरफेरेंस इन द स्टेट्स ज्यूरिडिक्शन ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स ऑल्सो। इस सेंटर अपॉइंट एंड रिमूवल ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव सेंटर के हैं, लेकिन स्टेट गवर्नर का अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ये तमाम करने का राइट प्रेसिडेंट को है। ये जाहिर करता है कि हमारा सेंट्रल पावरफुल है। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड चेंज इन द बाउंड्रीज ऑफ द ओल्ड स्टेट, ये डिसीजन भी सेंटर के पास ही है। States have no right to frame or amend their constitution. स्टेट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का राइट नहीं है। ये राइट सिर्फ और सिर्फ सेंटर को है। Easy method of amending the constitution. Units have no right to secede from the union. Unequal representation to state in the second chamber of parliament, and in federal system, in unitary features shows that India having single citizenship. Single judicial system is also here, means our judiciary is integrated. Supreme Court is the highest court of appeal. Though the states have the High Court, there is also the district courts, regional courts, but highest court of appeal is Supreme Court, means giving more and more importance to the central judiciary, that is the Supreme Court. All India administrative services controlled by center. There is weak economic and social planning. Right of center
to deploy armed forces in the state. मेन पावर डिफेंस का, आर्म फोर्स का सेंटर के पास है। ये मुख्तलिफ फीचर्स हमने देखे, फेडरल फीचर्स एंड यूनिटरी फीचर्स। होप you understand these features. Thank you for listening this lecture. Thank you very much.